Assalamu alaikum, everyone. This is Adnan Azim from Greenwich University. We have Mr. Aftab Shah joining us today. Today, we're doing our 10th episode of Social Psychology series. We're going to be discussing aggression in detail today. कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. What about you? Alhamdulillah, It's sir. raining Allah a Ta'ala lot. का शुक्र. It's raining a lot. It's raining cats and dogs. Yes. So aggression. I think one of the things synonymous with Pakistan is aggression. It's a lot of aggression. There's a lot of aggression. So we have grown up seeing a lot of instances of aggression, either happening to us or we see it happening to other people. So, I mean, let's just talk about those social norms as well. या कुछ बेसिक सी कुछ चीज़ों के ऊपर बात करते हैं. ग्रोइंग अप वायलेंस जो था वो अगर कि खुद के साथ नहीं हुआ तो इट जस्ट हैपेंड. लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई just recently thought of, or which came as a surprise as well, because it's so normalized कि हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं. यानी हम मगिंग को कितना एक बहुत हाँ सबके साथ होता है. Exactly, but usually it is like a body's response to a life threatening situation. तो उसमें कोई ना कोई तो आपका एक रिस्पॉन्स, बॉडी अराउजल आपका पैदा हुआ है ना, जिसकी वजह से ऐसा थोड़ी है कि वो उसी मौके पे था और वो ख़त्म हो गया. Like you were literally, your body responded to you either living or dying. तो आपको उसके बाद काउंसलिंग करनी चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए. उसके बाद you should talk to other people about it and how it affected you. I think with us it's like even like when you as a child start going out, like your family does tell you, especially like if you have a cell phone or something कि बेटा अगर कोई आया ना तो खामोशी से दे देना, बहस नहीं करना. Like that's ingrained to you, so you already know in case if you run into a situation like that what you need to do, and you just need to go off by your day. अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि इफ़ यू रिमेंबर व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन दो बम जो है ना, बम धमाके, वो तकरीबन मेरे 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हो चुके हैं. Okay. Right, and I was Did you feel the effect? Yes, definitely I felt the effect of the एक जो आपका एक धमाका होता है, and वो एक धमाका डिफरेंट होता है बनिस्बत टायर फट जाना. बट लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि एक दफ़ा तो बम फटा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब टायर फटेगा तो मेरा दिमाग तो यही जाएगा ना कि बम फटा है. For But it's a very different kind of a thing because it sends a ripple. तो अब ये चीज़ मुझे रियलाइजेशन बाद में आई कि यार ये भी तो एक चीज़ थी. My body had a response to that also. Like, did you ever think about it again? कि you know were in close proximity to a bomb going off. वो आपको तभी होता है जब आप किसी एनवायरनमेंट में बैठते हो और दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनते हो. तो व्हेन यू ट्रैवल, व्हेन यू मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, रिलेटिवली पीसफुल सोसाइटीज़ जिनके अंदर इतना एग्रेशन नॉर्म नहीं है, तो जब वो आपसे कोई चीज़ ऐसे बात करते हैं ना एग्रेशन के बारे में कि यार ये चीज़ ऐसी हो गई, एंड देन यू कंपेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड देन यू रियलाइज दैट ओके सो दिस वाज नॉट समथिंग, इवन दो this wasn't something normal. Yes, even though it was normal for my society, लेकिन ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, राइट? उसी तरह से we used to hear a lot about political violence as well. कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के लोगों को मार रही है, लाशें, all of those things that were used. नामालूम अफराद was a term that was used a lot even now, कि लोग किसी को भी आके मार देते हैं. These are unidentified people, assailants. इस किस्म की चीज़ जो है ना, we've grown up with. We have become desensitized to it. Again, desensitized भी हो गए, नम भी हो गए किसी हद तक इन चीज़ों को देख के. तो ये कुछ हमारे पास, if you look around you, तो हमें ये नज़र आता है कि एग्रेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू हैव अ डिस्कशन ऑन, given how much it has impacted us, all of our lives, be it girls, be it boys. Again, so let's just dive into it. Sure. Let's just talk about it. पहले हम बात करेंगे physical aggression and social aggression की. So when I'm saying physical aggression, I mean the definition is within the word. Exactly. Right. कि just being physically violent towards another person. Exactly. Physically aggressive. Harming someone physically. Anything that is not physical aggression, yani which is not crossing someone's physical boundary and hitting someone, that anything which is not that falls into the category of social aggression. Now that can include bullying, not necessarily bullying by verbally bullying someone, taunting someone, teasing someone, teasing someone,
on daily Making basis, fun of someone. humiliating and embarrassing someone, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी social aggression के अंदर. And then cyberbullying also falls within social aggression. Insults, harmful gossip, and obviously we talked about social exclusion as well. तो ये सारी चीज़ें जो है ना social aggression का हिस्सा हैं. तो इसको हम एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि एक passive है aggression, which is social aggression, एक जो है direct है, right? And does it sort of build up? Like most likely before someone escalating to physical violence, there would be it would be social aggression. Okay, then it takes up another level where now a person is okay with committing physical acts of violence. I mean, it would have to. You can answer this question when you look at this person's experience. Okay. If they have been conditioned into using physical violence as a way of achieving means to an end, तो फिर वो physical violence की तरफ जाएंगे. और अगर social aggression है, there is also a gender difference as well. Social learning की तरफ अमूमन कौन जाएगा gender में? Females. और उस तरफ Males. बस ये भी एक डिफरेंस है. तो one is prone आपका वो भी physicality भी है. There's a huge physical element to it. Yeah, so then you can sort of like a gorilla वो क्या बोलते हैं, punching his own chest, pumping up his own chest and trying to go like intimidate the other person because of their physicality. So now let's talk about two other concepts, which one is hostile aggression, the other one is instrumental aggression. So hostile aggression is something that springs from anger. It's just something that is very reactive. You just do it and you want to hurt the other person and you want to injure the other person. So it's a very reactive kind of an aggression type. And it's more of the things that are sort of spur of the moment. Spur of the moment. Rather than planned violence or anything. And since if something is planned, something is premeditated, then it is instrumental aggression. So yes, my intention is to harm and hurt, but that is not the primary thing that I want to achieve. I want to achieve something else also. So an instrumental aggression की example ये होगी. I think in the first one, your goal is the act of aggression itself. In the second one, your goal is what you're going to achieve by being aggressive towards someone. Exactly. And then the goal is something else. Exactly. The goal is perhaps to intimidate, instill fear, so this person can sort of like be submissive, be more complacent. So वो instrumental है, it's premeditated. तो वो जो होता है ना कि मुझे गुस्सा आ नहीं रहा, but I'm trying to send a message. Exactly. Right? A lot of people use that. And that is, again, physical aggression or social aggression. They can be either hostile or they can be instrumental, right? तो social aggression हो सकता है कि मैं gossip कर रहा हूँ, मैं bully कर रहा हूँ किसी को, and I'm doing that just very to enjoy that process. Reactively कर रहा हूँ hostile तरीके से, or I'm doing it again as you said to enjoy the process, right? Exactly. So instrumental aggression, when I talk about psychopathy in forensic psychology की series के अंदर, तो you would notice that a lot of psychopaths go towards the second dimension. Instrumental aggression होता है, उनको गुस्सा उस टाइम पे नहीं आता, they are not reacting, they go like okay. It's more about power then, it's more about dominance then. It's the whole act that they find very satisfying. Exactly, right? So we have talked about physical aggression, social aggression, hostile aggression, and instrumental aggression at this point. At this point, again, तीन ज़ाविये हैं, तीन different kinds of perspectives हैं. एक ही चीज़ को समझने के तीनों सही हैं अपनी जगह पर, right? तो go back to that kind of an example of blind men and the elephant. So they are holding different parts of the same elephant, but they are saying that this is this, or this is the tail, or this is the leg. It feels like this, it feels like that, exactly. Looks like this. But they are all right. They are all correct in their assessment. So similarly, we are going to look at it from the biological perspective. We are going to look at aggression from the lens of frustration alone. Okay. Right? कि मुझे it's like एक चीज़ होती है तो फिर होता है, तो aggression अपने अंदर कुछ नहीं है, तो frustration होती है तो फिर aggression होता है. We will talk about that also. But there's also the fact that at times it's almost like at the tipping point. Like on a normal given day, that thing would not frustrate you. But maybe
you had a bad day, someone said something wrong to you, and then things did not work out, and you got robbed, and then something happened, and you just lost it. Bring this point up again in aggression as a result of frustration पे जब हम बात करेंगे, because that is what the person who came up with the theory realized also. There were some loopholes. So the second one is again aggression as frustration, and the third one is the social learning part. That you are simply, this is a learned behavior from the environment that you grow up in. तो मतलब ये कहा जा सकता है, जो हम शुरुआत में भी बात कर रहे थे, कि since there is a lot of political, economic and other kind of turmoil in Pakistan, as a result of growing up in this environment, Pakistanis just tend to be more aggressive by nature, right? There's also the fact that even as a child growing up, going to school, you see how aggression or the threat of aggression is there in order to make other people behave in a certain way. So at times you can pick up on that. Maybe if I'm aggressive, or if I appear to be aggressive, then the other person would act a certain way and I could get my own way. Actually, normally that is ingrained or hardwired in our DNA to behave that way, right? Because animals behave that way, chimpanzees behave that way. If you look at when there are no rules, if there is a level playing field, when you talk about prison culture, what you have described actually is the prison mentality, that you have to fend for yourself, show aggression and induce some kind of fear in the other person, ताकि वो आपके ऊपर हमला ना करे, क्योंकि आप भी हमला कर सकते हैं, राइट? तो रेट्रीब्यूशन की वो चीज़ वहाँ से एक आ जाती है कि दैट कैन सॉर्ट ऑफ लाइक बी अ वेरी गुड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक. Yeah, because one part of it is biology, then other part of it, how do you take that biology and how do you structure it in a way that you're able to get what you want? Because if you're always aggressive, that's not going to benefit you. Very soon you'll be wiped out. So you need to be aggressive, but it also needs to be very controlled in order for you to sustain it. It has to be more instrumental. Yes. So a lot of people use aggression as a way, institutions use aggression as a way of it being an instrument. So if you look at mental warfare की जब हम बात करते हैं, psychological warfare की, कि मैं अगर के एक पॉपुलेशन है जिसके ऊपर मुसल्लत हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये रिजिस्ट ना करें, राइट? इनके अंदर जो है कुछ ऐसे भी लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं, तो आई एम गोइंग टू अप्लाई सम साइकोलॉजिकल टेक्निक्स on this entire population. I'm going to be aggressive, but not without any purpose or reason. I'm going to, as you said it, कि हमेशा तो नहीं हो सकता. It has to be planned, right? So वो वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है. Again, something very psychopathic, वो आप कर सकते हैं जिसको करना है. There are institutions who try to do that, but most of them are in law enforcement. Not the police, but the other part of it. Some agencies या some international organizations जहाँ पर उनका बहुत बड़े लेवल पर काम होता है. पुलिस का तो इतना होता है ना, because police is working with the community different. It's also in any environment where there are a lot of people, the pool of winners is very small, so everyone is very competitive. So the person who can be the most aggressive or who can show that they can be really aggressive is the one that everyone tends to avoid. अब वही वाली बात, again, what you're talking about is the presupposition if there are no rules. Yes. Otherwise there is rule of law ना, वरना तो physicality पे बात पहुंच जाएगी ना कि सबसे ज़्यादा dominating या सबसे बड़ा गोरिल्ला कौन है, वो उस डायरेक्शन में हम चले जाएंगे. बट अगर के रूल ऑफ लॉ है तो फिर आपको you don't have to be as aggressive. फिर आपके पास पता है आपको कि there is a due process, what has happened to me is wrong, and ultimately you see that person going to the jail or you see some kind of recompensation, तो आप बोलते हो हाँ ठीक है यार, सही है, restitution आपको मिल जाता है. So you particularly are talking about examples and situations जिसके अंदर aggression आप कर रहे हो और आपको reward मिल रहा है क्योंकि कानून ही नहीं है. Law of the jungle है. तो वहाँ पर, और ये one of the reasons as you pointed out, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है. यहाँ पर वो जो कहते भी लोग हैं जो सबसे जोर में है वही सबसे या ताकतवर है, again. So it's just like the same kind of philosophy that is applied here because of. And you see that on the streets. You see that on the streets. You see that कि गाड़ियों में. Exactly. वीगो में guards लेके लोग exactly. चल रहे हैं. The more a person can induce fear amongst other people, the more people won't mess with them, right? And this is reinforced. वो बचपन की जो आप बात कर रहे हो ना, वो इतनी reinforce होती है कि जब वो बड़े होते हैं तो फिर वो बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, पिस्टल लेके घूमते हैं,
and they want to induce that fear into people's mind. Because that's how कि उनके they साथ think कोई they will होगा be नहीं. respected. They would be respected. Acha. So again, talking about the biological perspective and aspect of it, there are certain areas of the brain that are responsible for aggression. So ये साइंटिस्ट ने किया कि उन्होंने डोसाइल किस्म के एनिमल्स को लिया और उन्होंने एग्रेसिव किस्म के एनिमल्स को लिया, एंड दे वांटेड टू मेक द एग्रेसिव वंस मोर सबमिसिव एंड द डोसाइल एंड सबमिसिव वंस मोर एग्रेसिव, एंड दे वर एबल टू अचीव दैट बाय स्टिमुलेटिंग अ ब्रेन एरिया, अ ब्रेन रीजन, हाइपोथैलेमस, राइट. उसको जब स्टिमुलेट उन्होंने किया तो ये चीज़ें उनको डिफरेंसेस नज़र आ रहे थे कि आइदर एग्रेसिव से डोसाइल, डोसाइल से एग्रेसिव. एक और भी एक चीज़ हुई थी जिसके अंदर एक साइकियाट्रिस्ट ने एक औरत को कुछ पेनलेस किस्म के, इसमें तकलीफ भी इंसान को नहीं हो सकती, वो कुछ इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दिया था इन द पर्सनस एमिगडाला रीजन, और उस औरत को दिस पर्सन डिड नॉट हैव एनी हिस्ट्री ऑफ बीइंग एग्रेसिव, उसने गिटार उठा के साइकियाट्रिस्ट की तरफ फेंका एंड नियरली मिस्ड द साइकियाट्रिस्ट अगेन. तो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन उसको जब एक रीजन में दी तो वो एग्रेसिव हो गई. उसके साथ साथ एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेटेड टू फोरेंसिक साइकोलॉजी, वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड सीइंग के एग्रेशन का आपकी बायोलॉजी के साथ इनर मैकेनिज्म आपका जो है, वेदर दैट मेक्स यू प्रोन टू वायलेंस, पहले से ही आपके अंदर वो चीज़ें हैं, तो जेनेटिक्स भी उसके अंदर आ जाती है. तो एक रिसर्च हुई थी लॉन्गिट्यूडनल किस्म की, 1998 में हुई, 2000 में हुई, 2008 में हुई, 2011 में हुई, जिसके अंदर ब्रेन स्कैन्स किए थे टू चेक द ब्रेन एक्टिविटी ऑफ पीपल विद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, एंड दीज पीपल वर बेसिकली कन्विक्टेड क्रिमिनल्स एंड मर्डरर्स. Okay. Right, and they found that prefrontal cortex area, this is your emergency brake. यानी कि अगर आपको गुस्सा आने वाला होता है ज़्यादा, आपकी बॉडी फॉर एग्जांपल एक जोन में जाती है जिसके अंदर उसको लग रहा होता है, That it manifests physically. manifests physically, or it tells you that you are actually under threat or you are not. It was a false alarm, it was an actual alarm. तो ये prefrontal cortex का काम होता है, और ये एग्रेशन से भी उसका अगेन कनेक्टेड है. मुझे एग्रेसिव नहीं होना है, ज़रूरत नहीं है एग्रेशन की, ज़रूरत है एग्रेशन की. ये भी वो सो दे फाउंड दैट 14% लेस एक्टिव इन दोज पीपल जिनका ब्रेन स्कैन किया था मर्डरर्स का, 14% लेस एक्टिव देन द यूजुअल पर्सन. So, ordinary person. a person's prefrontal cortex not being active, has it got to do with some genetic disposition, or it has got to do with maybe the lifestyle or the environment that they grew up in? Is that there was very little discrepancy between what they thought and acted out, and that's the reason, if you span it over 10 years, that's why they grow up into adults, that they did whatever it is that they thought of. Now what you are saying is could this be that they are in a feedback loop? The fact that they are in that kind of an environment, it's simply going round and round and round. And that is absolutely true, because biology fuels your behavior fuels your biology. So it's a two-way traffic, right? So again, nature, we are essentially saying that nature, nurture, nature. Because especially like people who grew up to be murderers and criminals, their childhood, if you look at their childhood, you would look at, there are a lot of building blocks that lead up to a person acting that particular way. A person with a perfectly normal childhood at the age of 20 would not turn out to be a gangster or murderer or target killer. अब सिचुएशनल फैक्टर्स की जो हम बात कर रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर के एक बिहेवियर ये है कि एक इंसान अपने आप को स्लीप डिप्राइव कर रहा है, what would happen biologically is that it's going to reduce the activity in the prefrontal cortex. Prefrontal cortex is responsible for also self control, emotional regulation के अंदर ना. तो अगर के आप अपने आप को सुला नहीं रहे, if you're depriving yourself of sleep, that would happen again कि आप you would become more aggressive because you don't have self control. One other study in 2014 showed that people who showed more aggression and people who are more violent, they tend to have smaller amygdala, right? That region in your brain that is smaller. So prefrontal cortex, और उसके बाद पीछे amygdala आता है. So is it like biological completely, like by birth they had smaller amygdalas, as a result they and it shrinks as well. वो तो बिल्कुल trauma के साथ भी यही होता है ना कि the way your brain develops, that also develops in
not in a sort of symmetrical तरीके से जो उसकी normal development होनी चाहिए, as a result of neglect वो उनकी development सही नहीं होती है, तो it changes their brain जो activation So like brain brain scans physical and chemistry gets changed. gets changed. आपकी पूरी वो जो brain के regions हैं वो different तरीके से activate होते हैं, people who have PTSD and people who don't, or people who have trauma and people who don't. So there is like समझो hardware और software, Okay. राइट कि तो एक इसमें मशीन तो बनी दोनों हुई है, चीजें malfunction कर जाती हैं. एक मशीन जो है आपके पास है, हाँ. उसके ऊपर सॉफ्टवेयर करना है अपना डालना है, विच इज़ द एनवायरनमेंट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो उसको फिल करना है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, वो उस ब्रेन रीजन्स को भी अफेक्ट कर रही है, तो उनकी डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही है, राइट. तो वन ऑफ दोज थिंग्स जो कहते हैं ना कि इफ अ मदर इज फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी एंड राइट आफ्टर, अगर वो स्मोक कर रही है, इफ शी इज ड्रिंकिंग, दैट्स गोइंग टू हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट. वो इसी तरीके से ही होता है ना. तो दैट्स अगेन इंटरेस्टिंग. बट वन मोर पॉइंट हेयर इज के आर मेंटली इल पीपल mentally ill people more violent? How do you more define aggressive? mentally ill people? People who have mental illness, any person who has a disorder, do they tend to be, for example, bipolars and people who have bipolar and people who have schizophrenia, उनके बारे में कहा जाता है कि these people are aggressive. That's not the case. Answering it, interestingly, being young, being a male, or being drunk is more of Is a higher predictor. if actually is a higher predictor or more of a precise predictor than a person or of aggressiveness than a person who's mentally ill. Okay. तो ये ज़्यादा है, मतलब कि If you're young, if you're a male, and if you're under the influence of alcohol, exactly, there's a very high possibility that you're going to be aggressive. exactly. If you are a male or if you are young and if you are drunk also, Drunk. तो फिर भी there is more chances of you being aggressive than a person who's mentally ill. Mentally ill people are the victims of basically violent behavior. Okay. Right? तो ये एक चीज़ होती है. I just want to touch over here on a basic, from a psychology standpoint. What is the relation between alcohol and aggressiveness? Like, there's some, you can say to a great degree, direct relation between people, you know, getting under the influence of alcohol and then becoming really aggressive. अच्छा, let's get into that. Biochemistry कौन सी चीज़ें change करती हैं आपकी which leads to aggression. So alcohol is one of those things which lessens your inhibition, it changes your biochemistry and you become aggressive. You tend to become more aggressive if you are under the influence. Okay. Right? उसके अलावा hormonal influence भी होते हैं. If you are taking things जिसके अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन एग्रेसिवनेस एंड टेस्टोस्टेरोन, राइट. ठीक है. तो ये चीज़ें उन्होंने डिफरेंट किस्म की स्टडीज़ की हैं. दे हैव स्टडीड पीपल इन द प्रेजेंट पॉपुलेशन एंड सीन के उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसा है. 25 के बाद एक डिप आता है टेस्टोस्टेरोन लेवल के अंदर. देयर इज़ अ कोरिलेशन, देयर इज़ नो कॉजेशन. सुनने वालों को ये लगेगा कि मैं ये शायद कह रहा हूँ कि अगर के टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका हाई है तो यू आर एग्रेसिव. मैं ये नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द फैक्टर्स, कोरिलेशनल फैक्टर्स, इसके ये भी है, रिलेट कर रहा है. जिसका ये है तो उसका ये भी है. ठीक है. इस तरीके से इट्स नॉट एज इफ के एक कॉज कर रहा है, राइट. तीसरी जो चीज़ है वो है पुअर डाइट. डाइट अगर के बुरी है, एक देयर वाज अ केस एज वेल, उसके अंदर एक ट्विंकी डिफेंस आया था. ट्विंकीज आई थिंक दे आर कैंडीज और समथिंग, चॉकलेट कैंडीज आई थिंक. तो उसमें जो उसका अटर्नी था, जो उसका लॉयर था, उसने कहा कि मेरे क्लाइंट ने कत्ल इसलिए किया है या क्राइम इसलिए किया है क्योंकि वो जंक फूड खा रहा था, राइट. सो इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर brain chemistry, your brain chemistry, so much so it changes your brain chemistry if you're eating a lot of processed food. और जो कि आप जंक फूड हो गया, पिज़्ज़ाज हो गए, बर्गर हो गया, ये जितने भी चीज़ें हैं, अगर आप if you're eating it on occasions, that's absolutely fine. Once a week is also fine. But if you're eating it every day, that is part of your diet, then that would also affect your aggression level, right? Interestingly, so there are things, mainly 3 things that can change your biochemistry. Alcohol, as you pointed out, testosterone and poor diet. So omega-3
डाइट में होना चाहिए, इट शुड omega-3 फैटी एसिड्स एंड लो इन फैट एंड नो स्वीटेंड काइंड ऑफ ड्रिंक्स. तो इस किस्म की चीज़ें अगर होंगी तो इट्स गोइंग टू मेक यू एटलीस्ट एन ऑप्टिमम लेवल, आपको गुस्सा नहीं आएगा एज रिजल्ट ऑफ योर पुअर डाइट. अब कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस पे चलते हैं. जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस में व्हाट दे हैव सीन इज के देयर इज अ जेनेटिक कंपोनेंट व्हेन इट कम्स टू एग्रेशन. सो व्हेन दे स्टडीड फ्रेटर्नल ट्विन्स, राइट, उनमें उनको नज़र ये आया कि बोथ हैड अ सिमिलर लेवल ऑफ एग्रेशन बिकॉज बोथ वर ऑल्सो गिवन द सेम काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट को हम ब्लेम नहीं कर सकते थे, राइट. तो एनवायरनमेंट भी सेम है, जीन्स भी सेम है, राइट. तो इसका मतलब है सम पीपल आर प्री डिस्पोज टू एंगर, प्री डिस्पोज टू एग्रेशन, राइट. एक और जेनेटिक स्टडी में आपको बताऊंगा. एल्बिनो जो माइस होते हैं, चूहे होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने ये किया. एक फिनिश साइकोलॉजिस्ट थी. व्हाट शी डिड वाज कि उसने डोसाइल माइस को अलग रखा और एग्रेसिव माइस को अलग रखा, और ये कहा जा सकता है कि लीस्ट एग्रेसिव एंड मोस्ट एग्रेसिव को अलग अलग करके और उनको ब्रीड करना शुरू कर दिया आपस में, राइट. तो लीस्ट को अलग ब्रीड किया, उनको अलग किया, और ये 26 टाइम प्रोसेस उसने ये 26 generations 26 generations के साथ उसने ये किया. एंड देन अगेन उसने देखा कि यस पीपल these mice, they're less aggressive and they are more aggressive. So that has people tend to also generationally अगर आपका aggression चलता आ रहा है, क्योंकि generation में फिर it means if your father was very aggressive and especially if your father was aggressive and he was rewarded for it, I think you would definitely pick up that aggression as opposed to. but he was rewarded as a result of the environment ना. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि environment से तो इसका ताल्लुक ही नहीं है. It's all genetics. It's from one generation to another. और एक recent studies में they found the gene. The gene is called MAOA gene, right? Does it stand for something? I think it's I don't actually know because again genetics की तरफ हम चले जाएंगे. तो but for now for viewers, for listeners, MAOA because I have an idea but I don't want to say it because for posterity हमेशा के लिए वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी और गलत हो जाएगा, right? So I'm going to tell you that full form of this in the next हमारी जो podcast episode होगा. But they label this gene as warrior gene. आपने सुना होगा कि मैंने वॉरियर जीन का नाम सुना है. वॉरियर जीन है या तो इसको वायलेंस जीन कहते हैं, राइट. ये 2020 की स्टडी है. सो दिस इज अ वेरी रीसेंट स्टडी जिसके अंदर इन्होंने दरियाफ्त किया है देयर इज अ जीन एंड पीपल हु हैव बीन फाउंड विद दिस जीन एंड दे डिड दिस स्टडी इन अ प्रिजन पॉपुलेशन के दे फाउंड आउट दैट दीस पीपल आर 13 टाइम्स मोर लाइकली टू बी रिपीटेड ऑफेंडर्स ऑफ वायलेंट क्राइम्स. ओके. Right. It's that strong in their biology. So strong that it accounted for 10% of the violent crimes in that country. Perfect. All right, everyone. So in our next episode, we're going to be talking about the most fundamental aspect of this entire conversation. Where does aggression stem from? Like, why does it stem and where exactly does it stem from? So stay tuned for our next episode. We'll carry this conversation further. We'll see you soon.